SIFC का पाकिस्तानी सनती शोबे की तरक्की में कलीदी किरदार। 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोजेक्ट फेयर 2025 11 से 14 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगा। नुमाइश में 2000 ब्रांड्स, 55,000 से ज्यादा विजिटर्स की आमद मुतवक्के। 850 से ज्यादा बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनंदगान शरीक होंगे। सारिफीन, रिटेलर्स, इम्पोर्टर्स और इन्वेस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश और मुसलसल जबर की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान पर बराह रास्त अपनी पाबंदियां आयद कर दी। अफगानिस्तान को असलहा और मुतलका मवाद या खदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 3 नाम निहाद तालिबान वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी माली और सफरी पाबंदियां आयद। और पाकिस्तान को जंग की दीगर धमकियां देने वाले शिकस्त और खाकी फौज का नाफज जंगी म्यार बेनकाब। मुतकब्बिर मोदी और उसकी फौज की तरबियती हामियों का पर्दाचा। भारतीय फिजाइया के तैयारों की नाकामी के बाद अब भारतीय फौजी टैंक भी नाकाम निकले। राजस्थान में फौजी मशक के दौरान फौजी टैंक नहर में डूब गया। एक फौजी हलाक, 2 जख्मी। भारत में फौजी मशकों के दौरान पेश आने वाला ये पहला हादसा नहीं। जून 2024 में लद्दाख में फौजी टैंक बह जाने से 5 एहलकार डूब गए थे। बैटरी चार्ज नहीं है सर इसकी? नहीं, 14 पिन पड़ी है। 16 ही है ना? 16 ये 14 नहीं।
16 पॉइंट जो एलसीडी आई है ना वो मजे की नहीं आई यार। जी जवेद ले गया होना तेरा दे या फिर वो शाम जवेद कौन है? या पर छोटा भाई। अच्छा हाँ वो कह रहा फिर ये ना